Hello my dear students, myself Dr. D.K. Sharma, and today just I am going to explain about the Gram's law diffusion. It is one of the most important topics from gaseous state of class 11. A lot of questions in case of Cbse as well as Neet as well as in IIT JEE are going to be framed on the basis of this concept. Actually, it is related to the intermixing property of the gas with another gas. जैसे देखते हैं हम लोग क्या होता है, आप सेंट फ्रेगरेंस यूज़ का परफ्यूम लगाते हो, आसपास में पूरी उसकी महक फैल जाती है। आप घर में पूजा पाठ में की अगरबत्ती जलाते हो, उसकी सुगंध पूरे फैल जाती है। आप लेबोरेटरी में काम करते हो, अमोनिया गैस पूरे क्या उसका सफोडिसल फैल चुका होता है। आप जो H2S यूज़ करते हैं हम सेकेंड वे साल्ट एनालिसिस में, उसका रॉटन एग्स की तरह स्मेल होता है, काफ़ी खराब गंध होता है। Actually, all this so happens due to actually diffusion of the gas. Actually, diffusion is the intermixing property of a gas with another gas against the gravitational pull at actually negligible pressure difference or actually low pressure gradient. But in case of effusion, it is a special kind of diffusion. It is actually kind of forced diffusion in which rate of intermixing is higher in diffusion. In case of diffusion, mind here, the intermixing property of two gases are not going to be influenced by the pressure difference. The pressure difference is so small that it is not going to affect the intermixing behavior of the two gases. So in case of diffusion, actually the Graham's law, the formula is independent of the pressure difference. But in case of effusion, the pressure difference has to be taken into considerations. Let us see, just imagine it is actually bladder, and there is a hole in this bladder. Just imagine inside pressure is P1 and outside pressure is P2. If delta P is almost 0, the case of diffusion. But if delta P is very high, that is a case of effusion. Just imagine there is a gas in this bladder at pressure is P1, P2 is the outside pressure, just there is a hole. If difference P2 or P1, difference of P2 and P is almost negligible, actually the gas will escape, gas will come out from across the hole very slowly. This gas is coming out of this bladder, it is trying its best to intermix with the other gas which is present outside the bladder. But in the second case, if this difference is very high, if just imagine the inside pressure is 2 atmosphere and outside pressure is 10 atmosphere, the difference of 8 atmosphere. That's why in that case, the intermixing behavior is going to be affected by the higher pressure difference. So just actually mind here, if the pressure difference is very low, is almost negligible, in that case, the intermixing property of two gases is independent of the pressure, and that is the case of diffusion. But if the pressure difference is very high, in that case, the intermixing behavior of gas is very high, and in that case, it is also a kind of intermixing nature of gas, no doubt, but actually it should be understood in terms of effusion. So I have already told you that effusion is a special kind of diffusion. Let me define diffusion nothing. Diffusion is the actual intermixing property of a gas with another gas against the gravitational pull at low pressure difference. But in case of effusion, it is also related to the intermixing nature of the gas, but it is possible at the high pressure difference, high pressure gradient. So in the case of diffusion, we are going to actually avoid the pressure difference value, but in case of effusion, we have to consider the pressure difference. Just come to the Graham's law. Graham's law. According to Graham's law, under the similar conditions of temperature and pressure,
Actually, the intermixing nature of gas, diffusing nature of the gas is inversely proportional to the square root of the density of diffusing gas or the molar mass of the diffusing gas. Like this, so on, this R is rate of diffusion. It is inversely proportional to the square root of D density or the square root of the molecular mass of the gas, like so on. So this R is equal to some constant K by root under D and some constant K root under M. Now it is quite clear from here that rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density and the molar mass of the diffusing gas. R for rate of diffusion, and this rate of diffusion is equal to volume by T, मतलब volume of the diffused gas, volume of diffused gas per unit time. By time taken for diffusion. Time taken for diffusion. There are two factors, the volume as well as time and the density of diffusing gas and the molar mass of diffusing gas. Just imagine we are talking about the diffusion of, we are talking about the diffusion of hydrogen. It is hydrogen gas, its molecular mass is 2, it is CO2, its molecular weight is 44. The molecular weight of CO2 is more than that of hydrogen, but natural heat is heavier than your hydrogen, so rate of diffusion of hydrogen will be more than that of CO2. अगर ये मैं कहें एक ब्लैडर की बात करें, just come to the second point. Just imagine ये कोई ब्लैडर है और इसमें हाइड्रोजन गैस रखी हुई है और एक होल यहाँ पे हम बनाते हैं, जस्ट एक होल बना हुआ है और इस गैस को बाहर आना है और जस्ट इमेजिन बाहर में ये CO2 गैस है समझने के लिए एक टैंक के अंदर में, इट इज़ केप्ट इन विद इन अ टैंक. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हल्की गैस रेट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ CO2. एक्रॉस द होल CO2 अंदर नहीं आए तब तक हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू कर देगी. जस्ट द रिवर्स, अगर CO2 अंदर हो हाइड्रोजन बाहर हो तो हाईएस्ट CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा हैवियर गैस है, डिफ्यूजन स्लो होगा और तब तक हाइड्रोजन गैस इसके अंदर चली जाएगी. अगर इस दूसरे केस हम लें, ये ब्लैडर है और इसमें N2O है और बाहर में CO2 है, दोनों के मास मोलर मास 44 ही है, तो होल के क्रॉस ना तो N2O निकल पाएगी और न CO2 अंदर जा पाएगी. मतलब क्या, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा. इसलिए कहते हैं इंटरमिक्सिंग जो बिहेवियर है इट इज़ फंडामेंटली कंट्रोल्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ द मोलर मास ऑफ डिफ्यूजिंग गैस एज वेल एज द वॉल्यूम एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन. तो जो हैवियर गैस है, और दोनों हाइड्रोजन को भी 10 मिनट ही दें और CO2 को हम 10 मिनट दें, तो हाइड्रोजन बीइंग लाइटर क्या हो, सब वॉल्यूम ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा, CO2 का कम वॉल्यूम डिफ्यूज़ करेंगे. दोनों के मोलर मास सेम हो जाए तो बट नेचुरल है कि वैसे केस में डिफ्यूजन नहीं होगा. और ये बार बार हम कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन इज नथिंग, इट इज द एक्चुअली रेट ऑफ इंटरमिक्शन नेचर ऑफ ए गैस with another gas against the gravitational pull actually at low pressure difference. जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो इसका धुआं जो स्मेल एक्चुअली जी के खिलाफ ऊपर उठ रहा है. आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल मिक्स इनटू द एटमॉस्फेयर. जी इज वर्किंग डाउनवर्ड, इसलिए क्या होगा, जितनी वह हैवियर गैस होगी इनका लिफ्टिंग का नेचर कम होगा. एक बल्कियर बॉडी खेलेगा नेट पर बैडमिंटन या वॉलीबॉल तो उसका कम लिफ्ट होगा. जो लाइटर बॉडी का है उसकी लिफ्ट ज़्यादा कर पाएगा नेट पे जाके. दिस इज द सेंस. तो इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी जो है जिसको हम डिफ्यूजन कहने चाह रहे हैं वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे कहें या लो प्रेशर डिफरेंस पे कहें, ये एक्चुअल डिफ्यूजन है. बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन वी हैव टू कंसीडर द प्रेशर डिफरेंस बिकॉज इन दैट केस pressure difference will affect the intermixing nature of the gas, like so on. Just imagine in case of rate of effusion. In case of rate of effusion, we have to consider
the pressure difference attribute of density and the pressure difference by under root m. In both the cases, this rate of effusion and diffusion, it will depend upon the density of diffusing gas and molar mass of the diffusing gas. ठीक है, next one. Just imagine it's a kind of open tube. Its length is L centimeter. Its area of cross section is constant, it is A. Just imagine ammonia is going to be released from this left end. Its molar mass is 17. And HCl gas is going to be released from the right end and its molar mass is 36.5. Being heavier gas, the rate of diffusion of ammonia should be more than that of rate of diffusion for HCl. A lot of such questions is going to be framed on the basis of diffusion. इनका मोलर मास 17 है, 36.5 है. बीइंग दोनों का एक ही साथ छोड़ते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉन्स्टेंट कांस्टेंट है, प्रेशर सेम है. तो बीइंग हैवियर ये कम क्या होगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी. मान लो इट इज़ ट्रेवलिंग फॉर x सेंटीमीटर और ये जो ट्रेवल कितना डिस्टेंस करेगा, L माइनस x सेंटीमीटर ये ट्रेवल कर पाएगा. तो वॉल्यूम क्या देखो, दिस वॉल्यूम वाज इक्वल टू दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन वाज इक्वल टू V बाई टी और V क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ बाय टी. तो बेटे A बाई टी इज कांस्टेंट इन दिस केस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, दोनों एक ही से छोड़ते हैं, T इज कांस्टेंट. In this case, rate of diffusion is directly proportional to the length or distance traveled by the diffusing gas. So actually it is also a factor in case of such questions. Area of cross section is going to play an important role. Actually the length or distance traveled by the gas is also a factor, and the pressure from which both gases are trying to come out. If both gases are coming out from at the constant pressure, it's a case of diffusion. In that case, HCl will travel at a smaller distance and the ammonia will go to the larger distance. This is the sense. And in this case क्या होगा जी, ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है. तो ये दोनों से क्या होता है, हम लोग निकाल लेंगे रिलेशनशिप. इस केस में rate of ammonia by rate of HCl is equal to volume of ammonia by time required for ammonia by volume diffused HCl by time required by HCl is equal to root under 36.5 root under 36.5 by 17. ठीक है. Now come to this point, is R ammonia by R HCl is equal to L minus X by X root under 36.5 by 17. If L will be given, अगर हम ट्यूब की लंबाई दे दिए तो हम कहें दोनों गैस किस पॉइंट मिलेगी, X पे जाकर वी कैन कैलकुलेट. अगर हम X दे दें तो हम क्या होगा, इस ट्यूब की लंबाई लेंथ हमको निकाल सकते हैं. सो लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस में बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है होगा.